Hello everyone, my name is Dave and today I'm practicing of Python string questions. This is the day 3 of Python practiced. In this video I'm practiced Python string questions. So this is the cheat sheet of Python practice questions. The basic to advanced I'm solving the 105 questions. Before I'm already solved these questions. Question number 1, question number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and side question number 4, 14. I'm already solved these questions in my previous videos, day 1 and day 2, and this is the day 3 class. So today I'm solving these questions. So let's get start the video. Write a Python program to display the characters that appears most frequently in a string. Okay, so this is the question number 14. Let's try to solve these questions. So this is a question. Write a Python program. In this video, I'm not the teacher. I'm a student like you, and I am also trying to solve the questions and trying to build our logical thinking how to solve the questions without copy paste the code. Or you also try to solve these questions in your terminal first, and then watch the videos to try to solve the question. If you have done any doubt, you can ask from the chat GPT like me. Okay, so let's get started. Write a Python program to find and display the characters. We want to in this question is to set to find the characters that appears most frequently. जो सबसे ज़्यादा आए हुए characters हमें उनको print करना है in a given string. In this given string, write a Python program to find and display the characters that appears most frequently in a given string. जो सबसे ज़्यादा number of times हमारे जो आए हैं उनको हमें print करना है. तो let's take str equals to hello hello world. So the L comes three times in this string. So the frequency of L is most. So the question said that print the L, print the L because L has the more number of frequency. O is two times come. So how to display it? So let's apply the for loop in this case because without for loop it does not work. It did not work. So how to solve? Let's try. Take a count equals to 0. Count equals to 0 for I in str because I'm applying on the str print if I'm I, so come result as this. And if I'm printing str only, so print this hello world, complete hello world, because here comes complete word, here comes complete word, and here comes only one character of this, and for this, but here comes this and again this and again this pura word and again this complete word. Okay, if I am applying I dot str, so what happened? So it give error because there's no meaning of this line. If I am dot I star dot count, so what happened? So it gives again error. There is any reason. If I want to count L, L comes three times, three times. It gives three times L. If I am printing I comma this like that, so H come as is three times. This is wrong. Nah? If I am count str dot I, so what will happen? So yes, H come one time, H come one time, E come one time, and L come three time, L come three time, O come two time, and space come one time. But the question said that display the characters appears most frequently in a given string. So about this question said to print the most frequently display the questions. So display the only L, not this, and not these, only print L. Okay, so how is this possible to? Let's try to solve. If
I'm doing this like that. If if I प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम प्रिंट मैक्स ब्रैकेट I. Is this possible or not? Let's try one. Is this possible or not? Yeah, it printed this. I printed this. Okay, I'm printing this. This is wrong. Okay. Let us I'm start the timer. If this question solved in a 5 minutes, so done. Otherwise, we ask from the ChatGPT for hint. And only one questions we are giving only 10 minutes, not more. Let's start. If this question solved in 5 minutes, so done. Otherwise, we are asking from the ChatGPT how to solve these questions. Where I am using my mind and also I am asking from the hint to solve these questions. Not I am copy pasting. You also try this like me. Okay. What the last questions? Last question. Write a Python code to check whether two strings are anagram of each other. What two strings are anagram of each other? Two strings are considered anagram if they contain the same character with the same frequency. Okay. I know I am already solved these questions, but this time I'm solving these questions. I'm solving this question. Okay. Write a Python code to display and characters appear most frequently in a given string that appears most frequently come L. So how can we print L? If str.count, this line gives if I'm printing the I only. So what will happen? H print. What the meaning of this line? There's no meaning of this line. If I'm printing this and I'm so what will happen? The line number 6, this this mistake and in this mistakes. So comes 1. What is the meaning of 1? What is the meaning of 1? Here H is the 1. This is the meaning of this line is I think we don't need to count. We don't need to count. Okay, but because we are at this questions we are solving through the indexing value, and this line generate the count. How many times of characters count? H come one time, so it display one. H come one time. If I am two time, so it give two. So H E. So what is the value of two? Is print dot count dot it printed indexing value two, but not two. H come two times, so it's printed two like that. But I'm trying to do something. So let us from the chat GPT give me hint to solve this question. Give me this question. Sorry. So please give me questions. Say that please send the questions and I will give you only a hint, not the full solution. Yes, thank God.
You are close since you asked for a hint only. Here are some clues for your current code. The break statement stop the after the first character, so you are only counting edge. Okay, I'm not. Do you really want to stop after this first station? No. You need to track of two things: the highest frequency found so far, the character that has the highest frequency. Think of variable like max equals to 0 and max equals to char. So think like a variable. So we are using the max char because uh, display display that character they have highest frequency. Inside the loop count the current character. Compare its max count. If it's greater, update both variable. Okay. We are using this. Okay, something like okay. Now I understand. I'm using this. It stored the value in this. Okay. After the loop finish print max care and max count. What is the max care? This is the max care and max count. What is the max count? This is the max count. Okay. Extra challenge. Your string is so the most frequency character is L. Okay. Now I'm try. I think it gave me hint, four hints. Now try to solve these questions. First, I need to take this here and this line stored count equals to this. So here is your indexing value stored. Here is your indexing value stored. If I am printing this value, if I am printing, wait a minute, trying to solve this question. Max cap. Okay, let's check max cap. Okay, not count. Here I'm taking max cap. Okay, count. Here your value is print count. If I'm printing count here, what happened? Let's check. Two, one. So this give the counting values. Okay, H come two time, E come one time, or L come three time. L come three time. So this is a similar meaning like previous syntax. It's similar. So but I'm printing the most frequency number. So let's check the most frequency numbers here. If count greater than equals to if count max count. What is the meaning of max count? Here, compare it with max count. Max count is this is the max count value. Okay, let's try. Here we need to take values, max count also. If this equal this, okay. So what come here? What come here? And last we print this line to final answer. If count greater than this, so print here count. I think. Otherwise, otherwise print max care. Sorry, otherwise print max count. This is the max count and count stored their value. Okay, now what will happen? Line number 9. So this is the correct syntax here, but this is not the correct. This is not correct. I want to print this, not display this. Okay, so this is wrong. So this line is wrong. This line is wrong. So what come here? Count plus equals to sorry, it's come here plus equals to 1. अदरवाइज नहीं तो कर दो आप बट अपेंड तो यहाँ पे भी एल को करना है कि मोस्ट फ्रिक्वेंसी वर्ड कौन सा था सो इंडेक्सिंग वैल्यू का आ रहा था इंडेक्सिंग सो इंडेक्सिंग पर नहीं आ रहा था मैक्स काउंट काउंट
इतना हम चला के एक बार देखते हैं इसको, है ना। Print करते हैं हम इस लाइन को, ये हमारे 3 टाइम सही। Here is your L come. Here is your L come because of this line. This line compare 3, तो मैक्स काउंट इज यहाँ पे आएगा आपका 1 2 3, यहाँ पूरी वो लाइन आ जाएगी। लाइन आने के बाद उसमें से कंपेरिजन करेगा ये 3 को, जो 3 हमारा ग्रेटर है इससे, मैक्स काउंट से। यहाँ पे इसकी अभी वैल्यू 0 है, सो जहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं +1 कर दो, फिर +2 कर दो, +3 कर दो, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू मैक्स काउंट की वैल्यू होगी हमारी 3। अब हमें ये उठाना है, मैक्स करेक्टर उठाना है। ये तो हमने पिकअप कर लिया, बट क्या 3, एल कम 3, तो हमें यहाँ पे ये भी प्रिंट करना है। तो बट यहाँ पे अभी तो ये एम्प्टी है, ये अभी एम्प्टी है। ओके, बट यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, एंड यहाँ पर शायद हम 2 कंडीशन लगा सकते हैं। टाइम ओवर ही होने वाला है ऑलमोस्ट। प्लस इक्वल्स टू, काउंट में तो हमारी आ रही है वैल्यू वो, बट वी आई नॉट, दिस इज रॉन्ग, HLL, नहीं 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 नहीं, आई नहीं लगा। लेट आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी, क्योंकि टाइम इज ओवर 10 minutes ऑलरेडी डन। आई एम ओनली गिविंग 10 minutes for every question. You are very close. There are 2 mistakes in your code. Max count plus one. Don't increase max count by one. Okay. If the current character appears 3 times, should max count become one or yeah, 3? Okay. It should restore the actual count. Mistake 2. You are right. This. Okay. I have done 2 mistakes. So something like max care. Max care. What should replace? It is the current from the loop. This. Okay. Can you give me complete code? It understand what I write. What I write, it understand. Write a Python program. I take first. I also take first. I also take this first. For I in str, count. I'm counting this. If max count equals to count and max care equals to I, this is the correct. Yeah. Okay. Okay. Sorry. Not increase here equals to max count equals to count and max care equals to I. Here answer L come 3 time. So let's इसको take करते हैं थोड़ा। Print the most frequently correct is I, है ना। Print it comes using this, I'm using यहाँ पे F string, most I'm using like I comes in string इतने time. Okay. Here I'm using not I, itne times. Okay. The most frequently character is L, and D comes in string 3 times, not D. Here come this. L comes in string 3 times. Okay, now this code is done.
I can solve this questions using the value, but I'm not doing this right time because I'm solving other question. This is the question number 12. Question number 14.py. Okay. Now let's move to the another question. What the next question is? Next question is 15 questions. Stop the time, pause and reset. This is the 15 number question. Copy it and paste here and try to solve this. Write a Python program to count and display the total number of alphabet, digits, special characters present in a given string. In a given string, it's set to find the alphabet, digits, and special character present in a string. Let's take a string str equals to uh, we can write the email address also. Okay, Jack Jack121 at the rate gmail.com. So here is a special character is 1 and also I think 2, and this is alphabet and this is digits. So it's had to count the count how many times the alphabet comes, 1 to 3 comes, gmail comes, total count the alphabet, count the digits and count the special character. So we can use also the count also in this case. But okay, let's try to solve this question. Make the timer 12 minutes only and give 6 minutes to solve yourself, and after that we are asked from the chat GPT to solve this question because of lack of time and to solve this 105 series because it's not easy, it's too lengthy and take too much time to solve 100 plus questions. So this reasons I'm trying to solve daily 10 questions. STR, I'm using the count first alphabet count equals to 0 because I'm counting the value how many times it comes appears. Count equals to and the special character equals to यहाँ पे 0 for I in str. Okay, it's pick up every one character of the string and it's pick up whole character of the string, whole characters of the strings. Okay, so what how can we solve this questions? Because previous questions I'm trying to solve like max count equals to count कि कितने टाइम ये अपीयर हुआ एच हमारा अपीयर हुआ कितने टाइम हुआ, हमने यहाँ पे मैक्स लगाया था, कंपैरिजन कर रहा है, काउंट कंपैरिजन कर रहा है कितने बार काउंट आए हैं, बट यहाँ पे भी हम काउंट ही कंप्लीट कर रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पे काउंट का लगाते हैं तो ये सारी चीज़ों को काउंट करेगा, बट आई वांट कि ये खाली इसको काउंट करे अगर ये करेक्टर है तो फिर ये इसको काउंट करे फिर ये इसको काउंट करे, ना कि पूरे स्ट्रिंग को एक साथ काउंट करे. So this is not possible. STR equals to jack121 at the rate gmail.com. Alphabet count equals to 0, digit count equals to 0, special character also equals to 0. So for I in STR, how can we solve this question? Okay, I want to count only. I'm trying to count only alphabet values. Okay, I'm trying to count only alphabet values. How is this possible? Hashtag equals to jack121 at the rate gmail.com. Alphabets count equals to 0. Digit count equals to 0. Special character equals to 0. For I in STR. So STR. Okay, अल्फाबेट्स को काउंट करना है तो हम यहाँ पे वॉवल्स को भी काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने वॉवल्स काउंट करे तो हमने तो इफ कंडीशन लगाई थी इफ आई लाइक वॉवल ए ए आई ओ यू, बट यहाँ पे चार कैरेक्टर को काउंट करेगा, बाकी ये 1 2 3 एट द रेट सबको स्किप कर देगा, बट हियर आई एम काउंटिंग द करेक्टर. तो हियर कम ए टू जेड, ए टू जेड,
maybe। जब उसने इसको काउंट करा था इसको, यहाँ पे तो हम इंक्रीज करेंगे जितने टाइम आएगा, तो हम इंक्रीज करने वाले प्लस इक्वल्स टू 1। I'm trying to count first alphabet। I think this is wrong, 3 times, it said 3 times, but how can a come a1 and a come one time and chat, there is no chat, not two, not o come one time, o come and space also come, there is no space, but this is not the answer। Give me only hint। अपने वहाँ ChatGPT, give me only hint, solve this question। Here are only hints, not the full solution. If A and Z, ask A to Z the alphabet or just normal strings. Yes, I understand. Each alpha is digit. Okay, okay. I forget to use this because we can also use this. Yeah, whereas मैंने says I'm not saving. मैंने save नहीं करी है functions को, but करे तो थे functions को saves. So let us from the ChatGPT write the all write the all function of string give me complete list। We have the capitalize, case fold, centers, count, encode, find, format। Here come each alpha, each digit, each alpha, each alenum. We can do this। This is the list, okay, this is the complete list। Here centered, case fold, function list, each digit we can use this each digit and also use each digit, each alpha. We are trying to solve this first, each alpha. If the alpha come, if I dot is alpha, so count plus 1 कर दीजिए आप, so it come 12 time, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, yes, it's worked bro। Now this question is solved। If I dot is digit, digit, because manually type करना it's not easy task। Plus 1 equals to 1, for a special character what we can use, otherwise else I think we need to else I dot for a special character, for a special character capitalize this each alenum for numbers, each alpha, each ASCII, each decimal, each digit, each numeric, each space। Okay, let us from the what function to find the special character। There's no single built-in string method that directly check whether a character is special or not. So we can find it enough. Otherwise, they not a special character। ch, so what the output come? Okay, is ch dot enough and not the space the special character।
So these are the special characters. String contains a special characters string. So if ch in string punctuation, what is the meaning of punctuation? Import string. Okay. So this is the special character content. Let's try to solve this like this. First, I need to import string and if ch in if ch in if I in this if I in so if I in plus equals to 1. Okay, let's two time. It's come one time, it's come two time. If I'm using dot again, three time. Now the question is done. If you have any doubt, I will explain in 1 or 2 minutes. In a 10 minute, I completed this questions. So let's इसको थोड़ा ठीक करते हैं. The, the alphabet, the alphabet come appear at time, itne time. Okay, the alphabet come appear at itne time, and digit come and special come. Special come itne time. Special character. Okay, now the alphabet appears at 12 times and the digit appears at 3 times and the special character also appear 3 times. So I'm removing here digits and digits come at the 3 times. This question is done. First, देखो, for each alphabet, if you want to find the alphabet, so there is a built-in functions. The Python provide you a functions each alphabet. For digit, Python provide you each digit, but there is no any special built-in function of special characters. So in a string, if you are using the string, so you need to import string. You need to import string module, and you are using the string modules. So you are using like this. If I in a string dot punctuation, if I in a string dot punctuation, so special plus one. What is the meaning of punctuation? Punctuation comes all the characters. Punctuations include all the characters like your like that. Punctuations string dot punctuation contain string dot punctuation contain these characters like that. Is alpha contain your is alpha contain your A to Z character is alpha sorry is alpha contain your A to Z character. This contain A to Z character like that. String dot punctuation contained your all special these characters. If any dot is also a special character. Minus is also a special character. Minus, plus, multiply, divide. Every character is a punctuation. Every character is a punctuation, not delimiter. Every character is a punctuation. So this is the method. First I am taking importing the string. I am taking the str. I am taking alphabet 0. I want to count the alphabet. I want to count the digits. I want to count the special. So I am applying the loop for I in str. I am applying the loop str. In this str, if I dot alpha, if I'm using the if else condition here. If I dot alpha, so print this line.
if I dot alpha, so print this line, plus 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 plus, and here your plus 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 increase, plus one increase, and then move to the second position. This condition is not solved, because when this condition is execute, after that this condition is execute, in the we know that the if else condition only one condition execute, but in this three of the condition is execute, because here is your any condition is not false, this condition is not false, this condition is not also false, this reasons all the conditions are run at a time. Okay, so alphabet equals to count plus one equals to elif is I'm using I is date if this, so if this and this is also done like that, and I'm printing all the lines like this. Okay, so I can also do this questions using the value, but at that time I'm not done using the value. So let's move to the another question. Question number 15.py. Okay, now what the next question is. The next question, this question number 16. I'm reciting the, I have only 10 minutes. Write a Python program to replace every space characters in a strings with a hyphen and display the update string. This is the very simple question. So it says that replace the space characters. It said that if there is any extra space, if there is any space, this is the space, and this is also space, replace this space using the hyphen मतलब, minus, I think hyphen minus, yeah, minus I think. So replace this. So this is very simple question, so we can use the replace in this question. So we can take the string enter by the user in this time. Yeah, we can take the string default, not enter by the user, because it is easy to understand the default value, but the enter by the user every time the value change, yeah, string change. So str equals to thanks for practicing practicing the Python series. Okay, so I want to this question said to replace this space, this replace by this. Okay, so this is very result equals to str dot replace, and there is two arguments. First is old argument, the old argument is space, and the new argument is minus, the new argument is minus. तो print करेंगे यहाँ पर result, here all result print. So the thanks for practicing the Python series. So this question runs successfully. If you want to replace this using the hashtag, so it replaced by the hashtag, not the hyphen. If you replace this double space, so this replaced by the double space. If you want to remove the space from the string, to remove the space, so there is no space between them. If you want to give the hyphen, so you can do this. Okay, so I'm printing this, print the old string r str, the updated string r result. Okay, so the old string r, thanks for practicing the Python. I'm using here, and I think this give the one space line. So we are using the plus here. So we are using here plus. We are using also here plus. So there's no space. There's no space in this line. Okay.
The old string are thanks for practicing the Python series. The updated strings are thanks for practicing the Python series. We are using to differentiate the stars. Now this question is done. So the old string this and the updated string this. So this question is done. Save it. This is the question number 16. Question number 16. Sorry. F2 dot py and paste here. Sorry. Okay. Next move to this 17 question. This is your 17 question. Print here and read it. Write a Python program to identify and display all the duplicate characters present in a string. It said that to print the duplicate characters in the string. Write a Python program to identify करना and display करना सभी duplicate characters को. So take again str equals to में hello world. It said that print display all the duplicate character. Duplicate this, display this, and display O or also O. Duplicate only duplicate characters को print करिए. Okay. So duplicate characters are take the empty string to duplicate. Okay, like character equals to empty string. I'm applying the loop again for I in str print if the duplicate character. How to find duplicate characters? We can find the duplicate characters using the count. If we are applying the count, so count identify how many times the characters come. If the count is 2 of any character, yeah, 3 or 4, so print that character. If the count is 1, so remove skip that character. Okay, got it. So let's try to print a count uh, like your I dot str dot count I. So the count of h is 1, the count of e is 1, but the count of l is 3. How can I say I dot this? I'm using this. H come one time, e come one time, but l come 3 times. So, this says that print the l, print the o, only print the o, and skip all the characters. Okay. The last question I have solved like I think 13 or 11th questions. So 14 write a Python program to display the characters appears most frequently in a given string. I think it said that print the most frequently. I'm also copy pasting the 14 question how it works for a better for understanding, not to see the code for understanding. I know how to write Python compiler like I've done this. So the most frequency character is L. In last case, the most frequency character is L. Only print the only most frequency character. But in this case, print the character comes most of the times and all the characters comes more than one time. So I have H, H. So now reset the this and give it 10 minutes of this question. str equals to my hello world char equals to empty for I in str print I comma str dot count I. So how can we solve this questions? str equals to my hello world char आ गई equals to my empty string आ गई I हम नहीं ले लिया str dot हमने count ले लिया I ले लिया. Okay, so हमें प्रिंट करना है अभी if we can store this
count, so it give error line number 6. Okay, if यहाँ पे हम we apply करेंगे if if count is greater than 1, if count is greater than 1, तो प्रिंट करेंगे दैट करेक्टर, उस करेक्टर को प्रिंट कर देंगे। इस यदि काउंट हमारा ज्यादा हुआ एक से, मतलब काउंट हमारा एक से ज्यादा हुआ, तो हम उस करेक्टर को प्रिंट कर देंगे। हमें क्या प्रिंट करना है, वो करेक्टर प्रिंट करना है। ओके, सो कैर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैर प्लस इक्वल्स टू आई, उस करेक्टर को प्रिंट कर दीजिए यदि काउंट हमारा ज्यादा हुआ तो 1 से। ओके, लेट्स ट्राई प्रिंट कैर L L O O L. Now this done. The character is print L, the character is print O O, and the character is print O. So in this string, the these characters are here count is more than one. इनका जो count है वो एक से ज्यादा है. According to logic and according to question, this question runs successfully. But the syntax of this question is not right properly. This is not the proper syntax, but the question is done, the logic is also done. This said that if the count is more than one, if the program duplicate the, what the meaning of duplicate, the characters appears at two time, at more than two time. Okay, yeah, more than one time. If the character is come one time, so that's not the duplicate. But how to write this code according to this? Okay, I'm printing, but I'm already printing. Okay, but how to solve this questions? Let us from the chat GPT how to, what the correct way. This syntax logic is correct according to the question. Question. Your syntax is correct, but logic depends on the questions. Okay. Find all the duplicate characters in a string, so then your logic is not complete correct, not complete correct but complete, because it's print the same duplicate characters multiple times. So your code is this: why L appears 3 times, so every time the loop sees L it adds another L. O appears 2 times, so it adds O twice times. Yes, okay, usually the expected output L O L O or O. Correct logic duplicate, what the correct logic? str hello world char for I in str, if str dot count, if str dot count greater than equals to 1 and I not appear char, so char plus I कर दीजिए, so output come L or O. Yes, because I'm printing this multiple times, I understand कि this code, this uh, code is not properly correct, I know, but I the user want print only those characters, not repeated. If the L come thousands of times, so this terminal fill complete and O does not show. Scroll to show the O, but this is the correct. Okay, let's understand. str equals to hello world, char equals to empty for I in str, if str dot count, here come your indexing value. Okay, here is your come your count value, not indexing value. When the count come 2 and greater than equals to 1, this condition is true, and this condition, if this condition is true, so print this, otherwise the condition enter the else conditions. Okay, so this condition is done, and I not appear in 1,
अपीयर इन केयर, आई अपीयर नहीं करना चाहिए केयर के अंदर। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू कि आई हमारा दिखना नहीं चाहिए। वन टाइम द L come one time, the loop runs successfully in this run first when the L come two times. So टू यहाँ पे आएगा एंड टू इज ग्रेटर देन वन, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एंड दिस कंडीशन ऑल्सो टू एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, वन मर्ज सजेशन डोंट str एज अ वेरिएबल नेम बिकॉज str इज बिल्ट इन पाइथन टाइप। ओके, तो टेक्स्ट ले सकते हैं हम। Text equals to my hello world care for I in text if text dot count the same question is same. Can you explain this? Can you explain this program? I understand because of you. I'm explaining. Yes, understand line by line. Text equals to my hello world. Text equals to my hello world, and this is your hello world. We have the string. Okay, step two, we take the care. We take the care. Okay, step three, for I in text. So your all the values comes. Indexing all the values comes. One equals to h, two equals to e come two time, e come two time, h come one time, e come two time, one two three not sorry two time, h come h iteration one and iteration two, three iteration l, four, five. This is your like a indexing value. Yeah, this is your like a serial number. Okay, the loop visit every character one by one. So text dot count I. Count how many times the current characters appears in the whole strings. Text dot count h come one time, e come one time, l come three times. So count like this. If text dot count greater than equals to one, so does this character appear more than one times? So h come h false, e false, o true and l true. So o and l come here and I not appear in the characters. So carries L O आ गया. So now the loop again reaches another L के पास जब जाएगा तो I not in L O, I L O में नहीं होना चाहिए, तो ये false हो जाएगी। तो यहाँ पे it does not add, ये add नहीं करेगा। Without this condition your output become like this. With the conditions output this. So char plus I, char plus equals to I, this add the duplicate character, ऐड करेगा डुप्लीकेट करेक्टर्स को नहीं करेगा, बट हमारा वो नॉट आए वो हमारा नहीं करेगा। कैर इक्वल्स टू क्वाइट व्हेन एल कम्स, तो प्लस एल हो जाएगा, प्लस एल हो जाएगा, फिर ओ आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका ऐसे हुआ, करंट करेक्टर्स एच ई एल एल ओ स्पेस डब्ल्यू, count 1 2 count h come one time, e come one time, l come तीन time, l come तीन time. Already in char no 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 yes, फिर no, फिर no, स्पेस नहीं है, नो नो यस, यहाँ पे भी ओ हमारा यस हो गया, यहाँ पे भी हमारा ओ नहीं था पहले। ओके, यस है तो हमारा रन स्किप हो जाएगा, इसमें एक्शन में हमारा स्किप हो जाएगा, स्किप हो जाएगी, स्किप हो जाएगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा, एल हमारा तीन टाइम है तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वन वन टाइम है। सो कैर में यहाँ पे एल हमारा यहाँ पे एल ऐड हो गया, यहाँ पे भी एल हमारा स्किप हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैर की वजह से। ओके, एच वन नो स्किप इक्वल्स टू, you can understand to see this table, but now I understand how this code is work. Okay, now this question is also done, so we can write this question properly. If str, we take here text because str is a built-in function. If text, if text dot count greater than equals to my I is greater than one, and also ch also char not in, char not in या what come here,
No, and I not n, sorry. I not in care. So print this line. Okay. Print this line. LO. Your LO comes. If I am using here double space. So double space also come. Okay. Double space but does not show. Here TD. One space, two space. Here your space also printed because space comes two times. Space comes two times. This is just space also printed, but I'm removing the space. So space come one time, space come two time. So space is also printed. Here is your space one time, but here your space is two time count. I'm printing KK, space come three time. Okay, but I'm printing again. बट वो स्पेस ओनली वन टाइम ही काउंट करेगा स्पेस एक बार ही पहुंच चुका है उसके अंदर ओके दिस कोड लाइक दिस आई एम कॉपिंग कस्ट एंड पेस्ट क्वेश्चन नंबर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 70 17.py I'm providing this file later okay how many times the video counts 56 minutes okay but the question is only solved 6 or 7 questions. What the next question is? Write up and display this question also. Write a Python program to check whether a given string contain only numeric digits and display the result. Simple. This question is simple. It said that write a Python program check whether a given string contain only numeric value. So we are using is digit functions and display the results. यदि वो numeric value show कर रही है तो आप प्रिंट करिए उन strings को print करिए and skip all the characters. I'm taking again the Gmail text equals to Vihan 121 at the rate gmail.com. If the string contained numeric value, so print that value and display that values. Result equals to I'm trying to solve this question without loop text but using the if else conditions. If text dot is digit, if text dot print is digit, print here yes string contain string contain numeric values. Numeric values. Okay. The the values are the values are text dot this line values तो हमारी यहाँ पे आएंगी ना. Try to run this much line because I'm printing here. I'm printing this line. Otherwise else not numeric value. Let's try. Not numeric value, but is the here's the numeric value. I need to print the result. Result equals to man. I'm printing this line here, and I'm print comment out all. Print result false.
इस डिजिट फंक्शन इज राइट ना? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था यार। आई एम चेकिंग दिस। इस डिजिट वे इस डिजिट इज राइट। इस डिजिट false. Why give the false? Text dot is digit. Text is here. Text is here. Text is right. What the mistake? Why this give is digit? I'm checking my previous questions. What my previous question like? Is alpha is characters. Here I'm using the present display all the characters. 15 question. Here I'm using here is digit. Okay. I think I need to apply the loop. I'm trying to solve this question by using the loop for I in and this. Okay, I'm commenting on this line and I'm copying this and print I dot sorry I dot is digit. Okay, if this come, so I need to count this should empty. Write a Python to check whether a string contain only numeric digits and display that रेस कौन कौन से डिस्प्ले हैं ठीक है यहाँ पाएंगे हमारी ओके दिस कम तो प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल्स टू आई 1 to 1. Now this question is done using the for loop, but without for loop this question's not completed. So let us from the ChatGPT why this question is not completed without loop. So this question is done. I'm copying this question and paste it here. Okay, paste here and remove these values, extra values. Say the question is done. Display the 1 to 1. Your display is 1 to 1 numeric value display. But why this question? Why this syntax not run? So let us from the Java without. I'm not using the loop, any kind of loop. First remove this and print this here. Okay. Let's try to run this again. False. Okay, I understand right now what happened. So don't need to ask from the chat GPT. I'm explaining you. It is a digit functions, yeah, it's alpha functions, yeah, it's numeric, yeah, it's string punctuation functions that give the answer in the form of true and false only. Not display your this, not display your this 1 to 1. It gives if the string contain numbers so print true. If the string contained numeric values so print true, otherwise print false. So this functions so this true and false. If I am using count here replace, so they display the value but they don't display that the value, but they give the answer in the form of each digit like this. If I am applying the for loop in this case, so it display the value. So and it display it contain the 1 to 1. So why it give the answer false? So let us from the chat GPT why the answer is why the answer is false. The answer is false because it is return true value only if character in the string is 0 to 9. Your code
contain false, your string contain this. So there is digits but the alpha. It says string is not made up entirely of digits. If the string completely contain the numeric value, the answer is come digits. Yeah, numeric value, yeah, true. Otherwise, give the answer is false. Okay. So this regions I am applying. If you want to display the value, so you need to apply the loop in that conditions. Okay. So this question is also done. I'm here is your question. Okay. Yeah, the numeric value, the numeric values are line number 8, comma. The numeric values are 1 to 1. If I am here 2, the numeric values are 1 to 1 2. Okay. This question is also done. This is the question number. I think this is the question number 17, question number 18. Question number 18. Move to the question number 19. What the question number 19? This is the question number 19. Write a Python program to find and display the second most frequently occurring character in a string. It says that the second most frequently character. So try to print the first characters. After that, we are display the second character. Okay. Occurring मतलब जिसका काउंट सबसे ज़्यादा हो सेकंड फर्स्ट नंबर पे लाइक we have again taking the hello hello word. So the first occurring character is L and the second character is O. So it said that to print the second character. So let's try the using first try to first print the first character. काउंट इक्वल्स टू एम्प्टी ले ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रिंट करना है एल को. लास्ट टाइम हमने एल को भी करा था ओ को भी करा था. इस बार ट्राई करते कि होता है नहीं होता है. आई टेक्स्ट क्योंकि हमें कुछ हटाना नहीं है इसलिए काउंट कराते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट काउंट ब्रैकेट में आई प्रिंट करें काउंट. तो सबके काउंट करेंगे ठीक है बट हमें मोस्ट फ्रिक्वेंसी करेक्टर को प्रिंट करना है. तो ओके राइट अप पाइथन टू फाइंड द फाइंड एंड डिस्प्ले द पहला फर्स्ट करेक्टर को प्रिंट करके देखते हैं. द फर्स्ट करेक्टर हमारा क्या है एल है. एल पे ही जैसे ही ज़्यादा जाए तो आप प्रिंट कर दीजिए एल. ठीक है. काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो आप कर दीजिए यहाँ पे प्रिंट दिस लाइन. L. Your L is printed successfully. L come more than two time. L come more than two time. L come. L is the first character. Your L is the first character. Come if I am printing here. O. If I am printing here two, three time O. O come four time. I think O
मोर देन वन टाइम आई एम यूजिंग हियर मोर देन वन टाइम, यदि एक से ज़्यादा पाया गया, एल हमारा एक से ज़्यादा पाया गया है, बट हमें पहले प्रिंट करना था मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर्स ओनली, सो दिस लाइन दिस कोड नॉट गुड। इस कोड को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन टाइम काम कर रहा है, बट मोर देन वन टाइम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन करा है, इसको भी थोड़ा रिसेट करते हैं, नहीं तो फिर चैट जीपीटी से पूछेंगे 10 मिनट। राइट अ प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिस्प्ले एंड कैरेक्टर्स मोस्ट अपीजिंग फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग, तो फाइंड करना है डिस्प्ले करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 14 करा था। देखो हमने एक काउंट लिया था, फिर मैक्स काउंट लिया था, ठीक है, इफ ग्रेटर देन, बस सिंपल था, इतना हमने ये करा था, ठीक है। हमने क्या करा था फर्स्ट, हमने यहाँ पे एक चीज लिया था, हमने मैक्स काउंट करा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर हमारा कौन सा है, सो डोंट नीड टू टेक दिस। यदि if like if your count is greater than equals to, एक और वैल्यू ले ली थी आपने, मैक्स काउंट, मैक्स काउंट इक्वल्स टू 0, यदि ये इससे ज़्यादा हुआ, ये इससे ज़्यादा हुआ, डोंट थिंक कि हम देख के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस एट द बिगिनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राइंग टू बिल्ड योर लॉजिक। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को जब दोबारा करेंगे, अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए विद लॉजिक, आई नो कि आप फर्स्ट टाइम थोड़ा समझ के देख के कर रहे हो तो नो इशू, अब एट दी आप 2 टाइम या 3 टाइम अगर आप पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में कहीं पे भी आते, तो यू कैन डू दीज क्वेश्चन इन जस्ट अ मिनट, without taking the without time wasting, you can do these questions in just a minute if you have the idea how to count, how to do, how to can, so you can use, you can do easily, so don't think कि आप कॉपी पेस्ट क्या कर रहे हो, प्रॉपर कॉपी पेस्ट करना इट्स रॉन्ग, trying to build your questions yourself first, okay। for I in text count equals to text dot count bracket I if count greater than equals to print, तो आप कर दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट आप प्रिंट कर दीजिए इक्वल्स टू में आई, ओके, योर मोस्ट काउंटेड वैल्यू डी, व्हाट द मीनिंग ऑफ डी यार, here is your count, here is count, if count is greater than equals to max dot count, ओके मैंने ठीक तो करा है, काउंट कैर ब्रैकेट में आई कर दीजिए यार, टेक्स्ट इक्वल्स टू में हेलो वर्ल्ड आया, ठीक है, बट इसने डी क्यों प्रिंट करा, डी तो हमारा मोस्ट काउंट है ही नहीं, फॉर आई इन टेक्स्ट, ठीक है, काउंट करा टेक्स्ट डॉट काउंट आई कर दे, ठीक है, इफ काउंट, काउंट की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन हुई, काउंट के हमारा ऑलरेडी हमारा वन न्यूमेरिक वैल्यू है, एंड मैक्स काउंट ऑल्सो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू 0 है, 0 से ज़्यादा है, तो आप करिए काउंट इक्वल्स टू में आई, ना कि प्लस करना है हमें, ठीक है, मैक्स का इक्वल्स टू में आई करा है, दोबारा रन करके देखते हैं, डी क्यों कर रहा है, एक बार इसमें मिस्टेक देखते हैं, व्हाट द मिस्टेक, व्हाट द मिस्टेक, बिकॉज लाइक 1 घंटा 14 मिनट हो चुके हैं, तो सॉल्व करते करते आई एम टायर्ड, आई एम कम्प्लीटली टायर्ड, मेरा माइंड भी थक चुका है, एनर्जी भी जा चुकी है, दिस रीजन, दिस देर इज वन लॉजिक मिस्टेक, व्हाट द मिस्टेक, if block you are updating count क्या है, बट यू आर नॉट अपडेटिंग मैक्स काउंट, हमने मैक्स काउंट को अपडेट नहीं करा है, ओके, तो मैक्स काउंट भी लिखना पड़ेगा, हमें दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तभी होगा आई थिंक, इसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना, फर्स्ट इसको अपडेट करेंगे हम, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू नॉट 0,
यहाँ आ ही जाएगा, हाँ ठीक है। काउंट ही आएगा ना, वही मैं कह रहा था। ओ, तो मोस्ट काउंट इज ओ, बट क्वेश्चन सेड दैट कि आपको सेकंड मोस्ट काउंट को प्रिंट करना है। यू क्वेश्चन सेड दैट टू प्रिंट द सेकंड मोस्ट काउंट। तो सेकंड मोस्ट काउंट कैसे प्रिंट करेंगे? फर्स्ट हमारा वर्क कर रहा है यहाँ पे, हेलो हमने ये लिया ये लिया। यहाँ पे हमारा जब प्लस वन हुआ, पहले एल हुआ, यहाँ पे सबसे पहले एल आया, उसमें प्लस वन हुआ, फिर यहाँ पे प्लस वन हो गया, ठीक है। एल आया, फिर इसका प्लस टू हो गया, बट सबका डिफरेंटली कर रहा है, तो हमें मोस्ट काउंट सेकंड करेक्ट करेंगे इसमें। लेट्स इसमें थोड़ा लॉजिक लगाएगा। टेक्स्ट इक्वल्स टू में हेलो वर्ल्ड, काउंट कैर इक्वल्स टू में मैक्स काउंट इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन टेक्स्ट और काउंट, या फिर क्या हम प्लस वन कर सकते हैं यहाँ पे? प्लस वन से तो कुछ नहीं होगा, सॉरी दिस इज रॉन्ग। नो नो नो, ये नहीं कर सकते। ये तो हमारा लाइक, अब मान लो यहाँ पे एक हमने हटा दिया, तो फर्स्ट करेक्टर तो हमारा मोस्ट काउंट वाला एल है, तो उसके बाद है सेकंड करेक्टर हमारा ओ है। पहला करेक्टर एल है, उसके बाद सेकंड करेक्टर ओ है, तो हमें यहाँ पे ओ को प्रिंट करना है, ना कि एल को। यहाँ पे आ रही है यहाँ पे इसकी काउंटिंग आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करें क्या? मे बी, बट वन भी काम नहीं करेगा, नहीं नहीं नहीं, वन नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी चार हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी वन होगा, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी चार हो जाएगी एल की। बट ओके, लेट अस slowly repeat it now. Give me only hint. You are already finding the most frequent second most. Think about these hints: institute max count and second max count. Okay, I need to take second max count. फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट मैक्स काउंट आ गया था, मैक्स केयर आ गया था, फर्स्ट मैक्स काउंट ले लेता हूँ, अब सेकंड मैक्स काउंट करना है। तो while looping through each other there are three cases: current count is greater than max count and current count is less than max count के होना चाहिए, otherwise do nothing। हाँ मे बी, आई थिंक हो गया। यहाँ में से सेकंड मैक्स काउंट सेकंड करेक्टर आ गया, ओके मे बी इफ आई नोट इन प्रोसिस्ट दिस इज माई फर्स्ट की, मैं पहली बार सुना प्रोसिस्ट भी कुछ होता है। पर लेट्स ट्राई, थोड़ा सा तो लॉजिक पता चला। दिस काउंट दिस काउंट इज फर्स्ट करेक्टर, दिस काउंट इज फर्स्ट करेक्टर, ओके। एंड काउंट कैर सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वल्स टू हम ले लेंगे वही एम्प्टी स्ट्रिंग, और मैक्स काउंट ऑल्सो सेकंड इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा इफ मैक्स काउंट इक्वल्स टू में इतना बड़ा, एंड हम यहाँ पे काम कंडीशन लाएंगे इफ सबसे पहले तो ये मैक्स काउंट और इससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दो आया, तो दो से दो आया, यहाँ पे ये हमारा भी जीरो है, यहाँ पे ये दो आया, तो यहाँ पे अभी जीरो है, तो हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ओके। बट यदि इसी को लेते हैं हम, अब यहाँ पे हमारा मैक्स काउंट, अब मान लो यहाँ पे हमारा तीन है, यहाँ पे ये आ गया हमारा एल जो आया था वो तीन टाइम आया था, ठीक है। तो अगर हमारा तीन से कम हुआ, अब ये कह रहा है यहाँ वाली वैल्यू से, सॉरी यहाँ इस वाली वैल्यू से हमारा कम हुआ काउंट की वैल्यू, अब इससे हमारा कम हुआ, इससे हमारा कम हुआ, तो आप ऐड कर दीजिए इस वाली लाइंस को, काउंट टू, काउंट टू, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, देखते हैं रन करके, रन होता है नहीं। सो डिस्प्ले हमें इनको करना है, काउंट टू, कोड तो चल गया।
करेक्टर ऐड नहीं हुआ, बस करेक्टर ऐड नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ था, इफ काउंट पे चलाया हमने, ठीक है, हम तो काउंट पे ही चलाएंगे ऑब्वियसली। काउंट यहाँ पे हमारा आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है मान लो 2, यहाँ पे आया हमारा एल 3 टाइम, मैक्स काउंट 0 टाइम। तो अभी हमने इसमें भी वैल्यू ऐड नहीं करी है, इसमें भी हमने अभी वैल्यूज ऐड नहीं करी है, तो सबसे पहले हमारी वैल्यूज इसमें ऐड होंगी, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तभी तो यहाँ पे वैल्यूज बढ़ेंगी, तो नहीं बढ़ेंगी। काउंट काउंट कैर मैक्स आई काउंट लेट्स ट्राई। लगता नहीं है चलेगा ये, अभी भी रन नहीं हुआ। पहली कंडीशन में तो ये प्रिंट होंगी, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन हमारी इंक्रीज होगी तभी तो ये वाली होगी। चलो लेट अस परफॉर्म चैट जीपीटी विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि 10 मिनट इसके हो भी चुके हैं इस क्वेश्चन में। If I not insist, what is the meaning of? Otherwise, you will compare the same character. You are close, but there is no major logical mistake. बहुत सारी mistake. One major. This the condition can never be true. ये condition कभी true होगी नहीं. Can a number is greater than or less than? तो शायद यहाँ पे और आए, यहाँ पे भी और आता है true and false equals to true, false. You need to two different condition, not one. अच्छा, तो वही मैं सोचा था अलग अलग। सबसे पहली कंडीशन हमारा ये बढ़ गया, फिर सेकंड कंडीशन हमारा ये आ गया। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड यार। मैं ये सोच रहा था, ये मैं सोच रहा था करने की, कि ये मेरे को करनी चाहिए अलग कंडीशन, क्योंकि यहाँ भी सारी मिक्स हो गई थी ना, इसलिए आई एम थिंकिंग, बट कोई नहीं। एलिफ या रन करेगी क्या? अभी भी रन नहीं करे, कोई बात नहीं। When you new maximum, do not forget to move the old maximum to the second maximum. फर्स्ट में नॉट मैक्स न्यू मैक्सिमम फाउंड, न्यू सेकंड मैक्सिमम फाउंड। सेकंड मैक्सिमम मैक्स काउंट मैक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। सेकंड मैक्सिमम आएगा मैक्स काउंट और मैक्स स्क्वायर, और मैक्स काउंट और मैक्स स्क्वायर, मैक्स काउंट और मैक्स काउंट। अभी भी नहीं आ रहा। सो इफ डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट प्रोसेस द सेम कैरेक्टर रिपीटेडली फॉर फाइंड। अब क्या मिस्टेक है इसमें, थोड़ा माइंड सब हो रहा है। कितना भाई, 1.5 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। You are improving, but two logical mistake. Elif count, condition is or condition is. Okay, give me solution. Yeah, I'm printing this slide. Not using anywhere. Count second max count. Max count. Give me solution. It take first hello word, first max count, मतलब first character and the second character. Okay. फिर take second max character, second max character count, ठीक है। फिर प्रोसेस करेंगे, इसमें जो भी करेक्टर आएगा वो इसमें हमारा प्रोसेस करेगा।
सबसे पहले इसमें फर्स्ट करेक्टर आएगा, फिर फर्स्ट करेक्टर कितने टाइम अपीयर हुआ, ठीक है। फिर इसमें सेकंड करेक्टर आएगा, वो कितने टाइम यहाँ पे अपीयर हुआ। फिर ये प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस में क्या आएगा। फॉर आई इन टेक्स्ट, यहाँ पे हमने लूप चलाया। इफ आई नॉट इन प्रोसेस, यदि आई हमारा प्रोसेस में नहीं पाया गया, तब प्रोसेस में पढ़ दीजिए +1। मतलब आई नॉट इन प्रोसेस, यदि आई हमारा खाली नहीं पाया गया तो आई +1 कर दीजिए। और काउंट करिए अब यहाँ से हमारी नई कंडीशन स्टार्ट हुई, काउंट इक्वल्स टू में टेक्स्ट डॉट काउंट, यहाँ पे हम काउंट करेंगे अपने इंडेक्स। इफ काउंट हमारा ग्रेटर देन हुआ मैक्स काउंट से, तो हमारा मैक्स काउंट है, मैक्स काउंट कर दीजिए। मतलब मैक्स काउंट क्या है अभी, मैक्स काउंट इसको प्लस कर दीजिए, नहीं तो फिर इसमें कर दीजिए, इसमें मैक्स कैर को प्रिंट कर दीजिए। फिर आएगा मैक्स काउंट इक्वल टू में काउंट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है। एलिफ काउंट में सेकंड मैक्स काउंट आएगा, यहाँ पे सेकंड मैक्स काउंट यहाँ पे काउंट कर दीजिए, फिर यहाँ पे आई कर दीजिए। ऑलमोस्ट मुझे तो समझ में आ गया है, बाकी मैं इसको अब बाद में करूँगा क्योंकि थोड़ा सा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। वैसे देखो समझ में आ गया है, आप अपने एक्सप्लेनेशंस के एक्सप्लेन इन डिटेल। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, and after that I am making another video, date 3। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेट यू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप मोड फ्रीक्वेंस। सो दिस इज योर प्रोग्राम। Hello world, taking this is your string. Frequency of every character 1 1, it come 3 time, it come 2 time। ओके, स्टेप 2 में मैक्स कर लिया है इन्होंने, एक खाली स्ट्रिंग ली, फिर मैक्स काउंट लिया यहाँ पे। फर्स्ट इन्होंने मैक्स, अबे यार, मैक्स कर लिया, एक खाली लिया। दीज वेरिएबल्स स्टोर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे। फिर इनिशियली ये 0 और ये एम्प्टी है। स्टेप 3 में ये हमारी स्टोर करेंगे, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे। इनिशियली ये भी हमारी 0 है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल स्टोर कैरेक्टर दैट हैव ऑलरेडी बीन चेक, जो कैरेक्टर पहले ही हम चेक कर चुके हैं उसको स्टोर करेगा। जैसे एल को हम पहले ही चेक कर चुके हैं, एल को यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो इनिशियली नथिंग है, खाली है हमारा सी हेलो वर्ड। जब हमारा चला लूप हमारा जब रन करेगा तो नोटिस इसने करा एल, एल हमारा 3 टाइम कम हुआ है। एंड वो हमारा 2 टाइम कम हुआ है। इफ वी डोंट प्रोसीड दैट, सो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट काउंट करेगा एल। सो विल बी कैलकुलेटेड, फर्स्ट एल आया, सेकंड भी एल आया और थर्ड भी एल आया, मतलब 3 टाइम आया एल। सो दैट अननेसेसरी, वी ओनली नीड टू कैलकुलेट इट्स वन टाइम, इसको हम वन टाइम ही काउंट करेंगे। और आई 10 आई इक्वल्स टू एच हुआ हमारा। तो स्टेप 4 में इफ आई नॉट प्रोसीड, यदि आई हमारा प्रोसीड एच इनसाइड प्रोसीड, एच हमारा वहाँ पे प्रोसीड के अंदर हमारा एच है, सो आंसर इज नो। तो देयरफॉर ट्रू आएगा। प्रोसेस करेंगे i+1, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस में हमारा एच आ जाएगा क्योंकि एच को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। एच हैज बीन प्रोसेस, एच हमारे यहाँ पे प्रोसेस्ड हो जाएगा। आई इक्वल टू ई आएगा। फिर पाइथन आस्क ई एच इनसाइड है, ई एच के अंदर है तो नो, तो प्रोसेस ही, तो एल आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन एल आएगा इनसाइड ई, लाइक दैट, ऐसे ही हमारे चलता रहेगा चलता रहेगा पाइथन। और स्टेप नंबर 8 में हमारा काउंट कर लेगा। So this program run like this, and you can ask from your ChatGPT, yeah, your teachers. I'm not your teacher, I'm also a student. Okay, so thanks for watching my video. If you want to solve next another question, so you can see this like this. These are your questions. You can solve further questions on these things. Here's your 25 questions completed. After that, your strong question. Write a Python will extract strings from the user and find the length of the longest of strings that contain no repeating characters. So it's too much difficult if you are not practiced the previous questions। यदि आपको इन क्वेश्चंस की नॉलेज नहीं है, इनका अगर आपने ये क्वेश्चंस करे, आपका लॉजिक्स यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आप आगे के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। नहीं तो आप ऑल टाइम कॉपी पेस्ट ही करोगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस आगे के क्वेश्चंस करने, तो आपको ये 10 से 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग एकदम स्ट्रॉन्ग कर देखिए इनमें लॉजिक्स कैसे लग रहे हैं। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फर्दर, अदरवाइज नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।